सो टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में हमने काफ़ी वीडियोस डाले हैं, मैं काफ़ी बारे में बात कर चुका हूँ एंड मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि टोटल नी रिप्लेसमेंट हम करते कैसे हैं, किन कंडीशंस में करते हैं। लाइव वीडियोस भी हमने डाले हैं। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूँगा इस फर्स्ट वीक ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव खेरा, मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ एट अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली। सो फर्स्ट वीक ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड्स जस्ट आफ्टर योर नी रिप्लेसमेंट। मैक्सिमम अर्ली कॉम्प्लिकेशंस इसी टाइम में होती हैं एंड दिस इज द टाइम पीरियड जब आपको हॉस्पिटल में रखते हैं। सो इस टाइम पे आप क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम डे 1। सो डे 1 ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट इज द डे हम आपको ऑपरेट करते हैं, वेदर आई डू वन नी और आई डू बोथ द नीज टुगेदर। सो व्हाट वी कीप द पेशेंट इन द आईसीयू फॉर द फर्स्ट डे। ये जनरली सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए होता है क्योंकि एक बड़ी सर्जरी हुई है, मेजर सर्जरी हुई है, थोड़ा बहुत एसोसिएटेड ब्लड लॉस भी होता है and patient is kept in the ICU for the first day. Movement is started on the first day itself. First day पे bedside physiotherapy हम करते हैं, ankle pumping exercises होते हैं, साथ में calf की exercises and static quadricep exercises, मतलब लेट के घुटने को नीचे दबाना, जो पिलो एक टॉवल को फोल्ड करके नी के नीचे रखते हैं and we tell the patient to press it down. So this is what all happens on day 1. Now day 2 is when we generally do the dressings. अगर कोई drain डाली हुई है, we take out the drains, we change the dressing. I start my patient on blood thinners. Blood thinners are very important after knee replacement. So initial first 7 days तक मैं in fact blood thinners injectable देता हूँ for bilateral knee, या single knee होता है तो initial first 3 to 4 days तक मैं patient को blood thinners injectable blood thinners पे रखता हूँ। सो डे 2 इज व्हेन हम ब्लड थिनर्स भी शुरू करेंगे। डे 2 पे पेशेंट को हम खड़ा कर देते हैं विद अ वॉकर। माय पेशेंट स्टार्ट्स वॉकिंग, वी स्टार्ट टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स एंड अलोंग विद दैट वी आल्सो सिंगल नी रिप्लेसमेंट अगर हम कर रहे हैं, वी डू टॉयलेट ट्रेनिंग। पेशेंट का हम जितने भी फोलीज कैथेटर होते हैं दोज आर रिमूव्ड एंड थोड़ा बहुत नी बेंडिंग भी शुरू कर देते हैं। हाउ मच नी बेंडिंग इज देयर डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट जनरली वी एक्सपेक्ट अबाउट 30 डिग्रीज ऑफ नी बेंडिंग ऑन डे 2 itself. Day 3, we start putting ice packs. Day 3 is after 48 hours of surgery. Day 3 is when we are expecting the maximum inflammation. Swelling सबसे ज़्यादा होती है, तो ice pack application शुरू हो जाता है। जो आपका ऑपरेटेड नी है उसके ऊपर ice pack लगाएंगे एंड अगर हमने सिंगल नी किया है तो Day 3 में हम staircase भी शुरू कर देते हैं। So the patient starts going up and down the stairs. Generally, rule of thumb is the operated knee is while coming down you put that first and going up you put up your non-operated knee. अगर हम दोनों घुटने इकट्ठे कर रहे हैं तो उसमें कोई ऑपरेटेड नॉन ऑपरेटेड का फंडा है ही नहीं। So we can use whichever knee is paining less is used first to go up and which is paining more is used first to come down. So ये हो गया हमारा day 3 का। Day 4 what we are going to be expecting is on day 4 पे the patient we are expecting will achieve about 60 degrees of flexion. 60 degrees of flexion is when I'm very happy and we are सिंगल नी पेशेंट्स को हम डे 4 पे डिस्चार्ज कर देंगे। These patients will generally go back home on the 4th day of the surgery. अगर हम bilateral knee replacement कर रहे हैं उनको हम 6th day पे डिस्चार्ज करते हैं। 4th day पे also मैं generally अपनी IV medicines बंद कर देता हूँ। I do continue for bilateral knee. I do tend to continue my IV antibiotics if the patient is with me in the hospital. पर जो भी IV injectables होते हैं वो पेन इसको हम टैबलेट्स पे कर देते हैं। हम जो ओरल मेडिकेशन होती हैं वो शुरू करते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो हम इंजेक्टेबल ब्लड थिनर्स दे रहे होते हैं फॉर सिंगल नी रिप्लेसमेंट्स, इसको हम एक ओरल मेडिसिन पे शिफ्ट कर देते हैं। एंड टॉयलेट ट्रेनिंग हो गया, हमारा नी बेंडिंग एक्सरसाइजेज शुरू हो जाती हैं, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल हैपनिंग ऑन डे 4। नाउ डे 5 इज इम्पॉर्टेंट फॉर पेशेंट्स जिनका बायलैटरल नहीं हुआ है। डे 5 पे these patients we are making them climb the stairs. Day 5 is again where I start thinking of other exercises like straight leg raises हम शुरू कराएंगे, hip raises हम शुरू कराएंगे। So this is all happening on day 5. Now bilateral knee replacement को हम day 6 पे discharge कर देते हैं। Day 6 पे for patients who have undergone a bilateral knee replacement उनका हम injectable blood thinners बंद कर देंगे and the patient is fit to go back home. Also, in day 5, I did not mention that my patients who undergone a bilateral knee, they will be climbing stairs. Now, day 6, once my patient go back home,
Day 7, unilateral knee replacement patients are asked to come back for a follow-up. The dressing is changed, and my bilateral knee replacement patients are asked to come back for a follow-up on day 12. Also, day 12 is a day generally हम walker patient को, if the patient is very comfortable, so 12th to 14th day पे हम walker भी हटा देंगे. So this is the first 7 days. What you have to watch out for during your first 7 days: first, excessive swelling, excessive pain, breathing difficulties, any fever, any burning in your urine. These are the common symptoms that you have to watch out for. कुछ भी हो रहा है, you should get in touch with your surgeon. And I hope आप लोगों को clear है कि how the first 1 week after a knee replacement goes. Thank you.